बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा ठीक हैं, खैरियत से हैं? बेटा कोर्स नेम इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स and today we are going to discuss our last topic of midterm: private solutions to externalities and public policies toward externalities. First of all, we will discuss private solution to externalities. Although externalities tend to cause markets to be inefficient, government action is always not needed to solve the problem. बेटा हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं एक्सटर्नलिटी क्या होती है, एक्सटर्नलिटी की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। फिर हमने पॉजिटिव को प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों में चेक किया था, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों में चेक किया था। अब हम इस एक्सटर्नलिटी के सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करता है कि एक्सटर्नलिटी हमें पहले से पता है कि मार्केट इनएफिशिएंसी की तरफ लेके जाती हैं। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर कोई भी कमोडिटी सेल नहीं हो रही होती। गवर्नमेंट एक्शन इज ऑलवेज नॉट नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हर दफ़ा गवर्नमेंट की एक्शन की ज़रूरत नहीं होती इस मसले के हल के लिए। इन सम सर्कमस्टांसेस पीपल कैन डेवलप प्राइवेट सॉल्यूशंस। बाज़ औक़ात बाज़ हालात के अंदर लोग प्राइवेट सॉल्यूशंस भी डेवलप कर लेते हैं। समटाइम्स द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नलिटीज इज सॉल्व्ड with moral codes and social sanctions. Consider, for instance, why most people do not litter. Although there are laws against littering, most people do not litter just because it is the wrong thing to do. The golden rule taught to children says, do unto others, दूसरों के साथ वही करो, as you would have them to unto you, जैसा कि आप अपने साथ होता पसंद करते हैं। Another private solution to externalities is charities. For example, the Syria Club, whose goal is to protect the environment, is a non-profit organization funded with private donations. मेरे बच्चे आपके सामने एक सीरिया क्लब की एग्जांपल दी हुई है। वो कहते हैं उसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस चैरिटी का क्या, ऑर्गेनाइजेशन का, इस चैरिटी का, इस इंस्टीट्यूशन का क्या मोटिव है कि अपने एनवायरनमेंट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो किसकी मदद से चल रही है, प्राइवेट डोनेशंस की मदद से। सिमिलरली colleges and universities receives gifts from alumni, corporations and foundations in part because education has positive externalities for society. Similarly, consider an apple grower and a beekeeper that are located next to each other. Each business confers a positive externality on the other. By pollinating the flowers on trees, the bees help the orchard produce apple. At the same time, the bees use the nectar they get from the apple trees to produce honey. Nonetheless, when the apple grower is deciding how many trees to plant and the beekeeper is deciding how many bees to keep, they neglect the positive externality. As a result, the apple grower plants too few trees and the beekeeper keeps too few bees. These externalities could be internalized if the beekeeper bought the apple orchard or if the apple grower bought the beehive. Both activities would then take place within the same firm, and this single firm could choose the optimal number of trees and bees. बेटा अब हम डिस्कस करेंगे पब्लिक सॉल्यूशन टुवर्ड्स एक्सटर्नलिटीज। द गवर्नमेंट can remedy externality by making certain behaviors either required or forbidden. For example, it is a crime to dump poisonous chemicals into the water supply. The government therefore institute a command and control policy that prohibits this act altogether. Beta, any question? Okay, thank you beta. Allah Hafiz.